We have been practicing Indian flower remedies for about 4 decades now. We started with integrated approach to healing our patients. We both are educated in modern medicine. I've done my MBBS and my husband, Dr. Atul Shah, is an MD radiologist. He's also an M.R.I expert. We took the road trusting the nature. It has the energy to heal us and the world. And here is the journey of treating so many patients with Indian flower remedies. This is our journey of learning and understanding Indian flower remedies. We want to share our journey and exploration which can heal you, me, and the entire world. Let's start the journey from the basic and how long it is used. Know what is a flower remedy. Let me tell you what is a flower remedy. So, flower remedy is the energetic imprint of a flower in water, and that water is now taken as a remedy. It is not an essential oil. No flowers are crushed in the process of making the flower remedy in the no cutting method. However, there is also a cutting method where flowers are cut and floated on the surface of spring water in a glass bowl. Only the energetic transfer happens in water, or biophotons are discharged from every living being, and the water captures this. It is as good as the energy field of the flower recorded by water. So there is no material transfer, there is no chemical transfer. It is just the energy transfer. Every flower has a message, a thought, an emotion associated with it. It's different for each flower. When we taste the water, we see chemically it is only the water.
but it has taken the bioenergy of the flowers. There are many ways we can use this flower remedy: orally, local application, spray. Many things are there: gel, lasers, hand spray, and neo hair therapy. So many things are there in this field that we can do it. We are physical beings, but we are also energetic beings. And there is an energy field around us which is also called an aura. We are both physical and energetic beings at the same time. We have thoughts and emotions. When you take the energy remedy or energy from the flower, it is as good as accepting a thought and a positive emotion or a bhav from that flower. It is in the water now, and when you take the drops orally or apply it like a spray locally over your body, you are actually taking that thought of the flower into your own body. It is pretty much like installing a new program for ourselves. It's like having into the integrated therapy, yes, it is not our visible body alone. It is even four more invisible body along with all soul is mixed. So it's very well we can feel down. So definitely flower remedy also having the same principle. It is after all the therapies are based on energy principle. Same principle is there. Flower remedies are different from allopathy. It treats the root cause of disease, whereas allopathy merely treats the symptoms of disease. See, allopathy has got a different level of action, while flower remedy is much higher, deeper, and it is encompasses right at the physical level, emotional level, mental level, spiritual level, auric level, meridians, chakra levels. So there are many areas which will be addressed by the flower remedies, which is not necessarily by the allopathy. Meet Mayank Shah. He came to us for treatment. थ्रोम्बोसिस हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021। मुझे पता चला कि मेरे इंटेस्टाइन में ब्लड क्लॉट हो गया है और इंटेस्टाइन पूरी गैंग्रीन हो गई है। तो मेरे को सेम डे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन होने के बाद मेरे को नेक्स्ट डे मेरे को स्ट्रोक आया, जिससे मेरी जो बोलने की जो अर्थ है वो स्टारिंग हो गया था। फिर बाद में कुछ एंटीबायोटिक्स देने के बाद वो ठीक हो गया, लेकिन इसी कारण मेरा विजन मेरा लॉस्ट हो गया ऐसे 10 दिन के अंदर। और बाद में मेरे को कोई भी एंटीबायोटिक्स मेरे को बॉडी पे लग नहीं रही थी। उसके कारण मुझे जॉन्डिस, मेरा बिलरुबिन जो जॉन्डिस में होता है वो 29 पहुँच गया था, और मुझे एक सेप्सिस बीमारी हो गई थी जो 60% को आदमी को लेके मतलब मर जाते हैं उसमें, तो 40% ही क्यूरेबल होता है। तो उसी दिन बाद में मेरे को तुरंत मुझे यहाँ से 40 शिफ्ट किया गया। तो 40 में मुझे 15 दिन रखा गया। तो 15 दिन तक उसने मॉनिटर किया उन लोगों ने। फिर मेरा देखा एक दिन मेरा अचानक से मेरा बीपी डाउन होने लगा, तो मेरा डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन कर दिया, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरा जो स्टोमा निकलने का था वो स्टोमा सक्सेसफुल नहीं हुआ। नेक्स्ट डे उसने वापस मेरा ऑपरेशन किया और मेरा स्टोमा लगा दिया। लेकिन उधर भी मेरा सबसे थोड़ा ठीक हो रहा था, लेकिन मुझे एक और नया वायरस है, वी वायरस करके, वो भी क्यूर करने का था। वो थोड़ी दिन होने के बाद मुझे कैंडिड आ गया मेरे स्टमक के अंदर, फिर वो क्यूरेबल का टाइम। और मेरा जो वूंड था वो वूंड बिल्कुल भी हल नहीं हो रहा था। उसको हर दिन मेरा डॉक्टर आके उसको क्लीन करता था। वो क्लीन होने के लिए बहुत टाइम लगा, करीबन 2 मंथ्स गया उसको क्लीन होने के लिए। और मैं जब 40 से मैं अक्टूबर में मैंने 31 अक्टूबर मैंने डिस्चार्ज लिया और नवंबर 1 को मैं घर पे आया। लेकिन मेरा एक टाइनी होल था जो फिस्टुला था, वहाँ पे अभी भी मेरा क्लोज नहीं हुआ था, उसमें से डिस्चार्ज हो रहा था।
और मेरा क्रिएटिन लेवल तभी 5.6 पहुंच चुका था। और मेरे को बुखार बार बार आता था क्योंकि मुझे सेंट्रल लाइन डाल के रखी थी जहाँ से मुझे टीपीएन और आईवीज जा रहे थे। Then flower remedy treatment was started because he was suggested to try other systems of healing. पहला बात, सबसे पॉजिटिव पॉइंट मेरा क्या हुआ, विद इन 15 डेज मेरे दो मेजर चीज़ थे। एक तो फिस्टुला, जो टाइनी होल पिन जितना था वो क्लोज हो गया। सेकंड चीज़ थी, जो मेरा क्रिएटिन लेवल 5.6 पहुंच चुका था, जिसके लिए मुझे डॉक्टर वैभव केसकर कर गए फोर्टिस में, मैंने डायलिसिस के लिए बोला था, वो मेरा डायलिसिस रुक गया और मेरा क्रिएटिन लेवल धीरे धीरे करके डाउन होने लग गया। तो मेरे पहले इमीडिएट मेरे ये दो बेनिफिट हुए। उसके बाद बेनिफिट मैंने ये देखा कि जो मेरे को बुखार आ रहा था, जो सेंट्रल लाइन मेरे को अंदर डाल के रखी थी, वो उसका फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गया था। पहले मुझे एक दो दिन में बुखार आ जाता था और मुझे 2 घंटे तक शिवरिंग रहती थी। वो लेने के बाद मेरा इम्यून पावर भी बढ़ गया और मेरा जो बुखार आता था, लेकिन फ्रिक्वेंसी अभी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद होने लगा और मुझे खुद का अंदर से मुझे स्ट्रॉन्ग फील होने लगा कि मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे को लगा नहीं, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़। आज आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावर रेमेडीज़ के कारण है। एलोपैथिक का भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे डॉक्टर्स ने नहीं मुझे हेल्प किया, दूसरे डॉक्टर्स ने भी हेल्प किया, लेकिन सबका कॉम्बिनेशन मिला कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। Generally, the feeling is that allopathy works faster and allopathy works for acute problems. I beg to differ with those people. The good number of Indian flower remedies which we have developed works for acute, and sometimes we see the results in 60 to 120 seconds. I'm talking. That means in 1 to 2 minutes you can see very positive, favorable results. बोलती हूँ ना, मेरे बेटे को लेके सबसे ज़्यादा मतलब हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा टेंशन का टाइम वही था जब मेरे बेटे को स्वाइन फ्लू हुआ था। और तभी स्वाइन फ्लू का बहुत ज़्यादा टेंशन था, तो उसको लेके हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आए थे। लेकिन जब निकले ना, सर ने बोला था तू अंधेरी जाके मुझे कॉल कर, तो अंधेरी से पहले ही मेरे बेटे को फीवर उतरने लगा। मेरा बेटा जो भव्य था वो 2-2.5 महीने का ही था, तो उसको बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया। उसकी वजह से, डायरिया की वजह से उसको इतना प्रॉब्लम हुआ कि he almost entered the stage of coma. You can say he just entered the stage. He had just reached the dose. तो मैंने डॉक्टर को वापस फ़ोन किया, डॉक्टर अतुल को, कि डॉक्टर अतुल मेरे बेटी को बहुत बोलते क्या, ओके आई एम कमिंग। मैंने कहा मैं आइडिया आ जाओ मेडिसिन लेने, तो क्या नहीं मैं आ रहा हूँ। तो वो आए और उसने वो बेटे के नेवल पे मेडिसिन रखा, क्योंकि वो मुँह नहीं खोल रहा था, कुछ ही उसका कुछ उसके उसकी कुछ सेंसेस ही नहीं थे, तो वो मुँह नहीं खोल रहा था। उसने उसके नेवल पे वो मेडिसिन रखी और यू कैन से इट, आई वाज सो हैप्पी। 3 घंटे के बाद मेरा बेटा होश में आ गया, जस्ट होश में, और he started crying and he started roaming, and then after 5 to 6 hours मैं उसको ट्रॉली में लेके घूम रही थी हॉस्पिटल के बाहर उसको लेके। सो आई वाज सो हैप्पी एंड आई हैव अ वेरी गुड रिजल्ट्स विद डॉक्टर अतुल, वेरी गुड रिजल्ट्स विद द फ्लावर रेमेडी। इमीडिएट इट वर्क, फर्स्ट डोज से इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। देखिए यूटीआई हुआ तो फ्लावर रेमेडी ने मेरे को हेल्प करी, मेरे को डायरिया हुआ तो फ्लावर रेमेडी ने हेल्प की, मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो फ्लावर रेमेडी ने हेल्प की, बॉडी एक रहता है तो फ्लावर रेमेडी ने हेल्प की, साइकिक जितना भी स्ट्रेस, जैसे बिजनेस है मेरा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का सारा का बिजनेस है, और फार्ला बहुत छोटा टाउन है लेकिन बहुत बड़ा मेरा बिजनेस है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस भी रहता ही है, तो वो ट्रोमा शॉक भी लगते हैं, एक्सीडेंट्स भी हुए मेरे, एक्सीडेंट्स के अंदर रिकवरी जो है बड़ी फास्ट मिली है मेरे को, हीलिंग के अंदर बहुत फास्ट मिली है, प्रोस्टेटाइटिस के अंदर, यूरिन इन्फेक्शन के अंदर इमीडिएट रिलीफ मिलता है, 1 और 2 डेज के अंदर एंटीबायोटिक को काम करता है, 3 दिन लगेगा, इमीडिएट इफेक्ट है, सुबह लिया शाम को असर आना शुरू हो जाता है। Flower remedies work from all kinds of cases, from small to big cases.
Some of them can be also hard, difficult, or incurable cases. It can be as small as a problem of acne to maybe a severe autoimmune disorder. Stories of healing and transformation of such cases will bring about hope in the hearts of many. मेरे को सबसे पहला टीबी हुआ था। हाँ, टीबी भी हम लोग को दोनों को हुआ था, लेकिन ये डॉक्टर साहब की दवा से हम लोग दोनों बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उसके बाद और 1-2 साल के बाद फिर से हम लोग को हर्पीस हुई। हर्पीस से भी हम लोग डॉक्टर साहब की दवा से उसमें भी हम लोग दोनों जान निकाल के आ गए। उसके बाद इतना बड़ा कैंसर हुआ कि डॉक्टर खुद बोला कि बचेगी नहीं। वो हम लोग होली स्पिरिट हॉस्पिटल में गए, तो उधर का हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने उधर का चेक किया, तो उसने बोला कि बहुत कैंसर बढ़ गई है, कि इसका बचना तो नामुमकिन है। इतना मेरे को अभी डॉक्टर बोला है नहीं बचेगी, तो अंदर से तो वो रहता है ना, लेकिन हम लोग को ये भी विश्वास था कि डॉक्टर साहब से हम लोग हमेशा हम लोग पहले से उससे दवा ले रहे थे। कैंसर से ही पहले से हम लोग उसे डॉक्टर साहब से दवा ले रहे थे। तो उससे भी एकदम थोड़ा 2-3 महीना हुआ होगा, तो हम लोग वही होली स्पिरिट हॉस्पिटल में गए। वही जिस डॉक्टर ने बोला था कि वो नहीं बचेगी, वही डॉक्टर ने चेक किया, बोलने लगा तू किधर बीमार है, तू तो बिल्कुल ठीक है, तेरे को तो कोई भी बीमारी नहीं है। वही डॉक्टर वो बोलने लगा। फिर हम लोग उधर से सीधा हम लोग डॉक्टर साहब के पास आ गए कि डॉक्टर बोल रहा है, होली स्पिरिट हॉस्पिटल का डॉक्टर बोल रहा है कि तेरे को कोई भी बीमार नहीं है, तू बिल्कुल ठीक है। वो बोलने लगा तो डॉक्टर साहब इतना खुश हो गया, क्योंकि हम लोग उसका ही दवा लेते हैं, वो टाइम पर भी उसका ही दवा ले रही थी। I started this journey of using their medicines first on myself, because it was like a whole new software being installed. I'm in my mid-50s now, but I felt 20 years younger the second I took it. It was like balancing me so beautifully and subtly. I knew that I had hit something really powerful for the first time in years, because I was always seeking newer things to help my patients and people across the world, and this is amazing. So the precinct from where I started to kind of explore flower remedies is primarily because there is always a cure in nature, and the simplest form would be in the power of flowers, for example, and everything else could be a repertoire, which could be a large one, but the easier one to understand is moving towards nature, which is flowers, the most delicate part of nature. And that's one reason why I started to explore that. And I have found them to be profoundly helpful for the state of mind, because we have pills and medications for physical aspect of it, or surgery for any aggravated condition. But when we look at the state of mind a person is in, and sometimes that can have a large impact throughout their lifetime, and they can be stuck in a particular state of mind for long periods of time. We don't have remedies for that, except for looking at directly intervening into the hormonal system of the body, or a neurotransmitter, for example. Those are not in sync with what the person really wants to reorganize themselves into. So that's where I think flower remedies play a very significant role. I want to share my mother's incident. So mother was not feeling well. So March this year only, 2022. And my brother called me up. वो बोले मम्मी को अगर तुम आ सकती हो तो आके मम्मी को मिल लो, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। और जाके देखा, my mother was quite serious. मतलब ऐसे लेटे लेटे, बैठते नहीं थे, बात नहीं करते थे, ऐसे लेटे लेटे ना सीलिंग को देखते रहते थे बस। किसी से बात नहीं करते थे, बताते नहीं थे, शेयर नहीं करते थे, completely bedridden. तो
मैंने भी गिव अप कर दिया, मेरे ब्रदर ने भी गिव अप. माय ब्रदर इज आल्सो ए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर, ही इज रनिंग 2 हॉस्पिटल्स इन पंजाब. तो उसने भी गिव अप कर दिया, मैंने भी गिव अप कर दिया. डॉक्टर अतुल बोले छोड़ दो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे पता है इनको कैसे ट्रीट करना है. तो उन्होंने मम्मी के लिए मेडिसिन भेजी, तो मम्मी का मूड भी ठीक हो गया, मम्मी का वो डिप्रेशन भी चला गया. क्या प्रॉब्लम थी हमें नहीं पता. तो भूख भी लगने लगी, चलने फिरने भी टच वुड चलते फिरते हैं, सब कुछ करते हैं. किचन में अपने लिए जो थोड़ा बहुत जैसे चाय या पानी गर्म करना है, हल थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं वो भी. पता नहीं क्या मिरेकल किया है इन्होंने, बट मतलब हम भाई बहन को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, डॉक्टर अतुल ने. थैंक्स टू हिम. When we take the message or a thought from a flower, it's like the soul of the flower talking to the soul in me and installing a program. If a child is very fearful, we understand that this child needs courage program, confidence program, fearlessness, abhay, become nirbhay. So the swallow what? The flower that is offered to Hanumanji, that's the one that has the installation possible because it has the courage program. And I have a son, Vivan, who's now 13. So he was facing a lot of issues in school. He was facing a lot of bullying issues. And, you know, even if it was not bullying, but if somebody was telling him something, he was unable to understand what the emotions and actually, you know, perceive it, how to deal with it. Like he was not being able to deal with it, and he was not even being able to understand what was happening. That was one very big issue. So we used to always find him like a bundle of nerves. And I am a very obsessed mother. So seeing him so anxious and nervous was making me very anxious and nervous. And I was also passing my anxiety to him. So I think wo double anxiety ho raha tha. And since the age of 3 months, he's got atopic eczema, dermatitis thing. So he used to get rash all over his skin, especially in the dry winter season. So these were the 2 main concerns. Third was fear of animals and small things like not being able to sleep alone. Handwriting was really bad. But I think my main agenda was to deal for getting him more emotional balance and to treat his eczema. So I remember, doctor, this one statement you had told me when I'd come to meet you, which he said that you're going to see him bloom like a flower, and which he actually did. Like a year later, the transformation we saw, like he actually bloomed, you know, he actually tried to be very mature and not mature, but he's still a child, but very, very nicely be able to process his emotions and how to deal with it. Fortunately, nature has bestowed us with tremendous varieties of flowers. All colors, sizes, fragrance, different seasons, and different healing properties. Flowers help us to get healed from various kinds of mental, emotional, and physical issues. They are here for us to start our journey of healing with their help. जो OCD का प्रॉब्लम है, जो डर लगता है कि मेरा कुछ छूट गया या फिर मिस हो गया या फिर जो मूड डिस्टर्बेंस रहते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता या फिर चिड़चिड़ाहट होती है. नींद में पहले बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता था और कितनी भी नींद ले लूँ तो भी नींद पूरी हुई कि नहीं हुई ऐसा नहीं लगता था, फ्रेशनेस नहीं लगती थी. और इसकी वजह से मैं जल्दी पास नहीं हो पाया इंजीनियरिंग में. इसके पापा गुजरने के बाद जब तक वो बहुत होशियार था, लेकिन गुजरने के बाद बहुत पढ़ाई में पीछे आ गया. यानी मेरी लड़की को भी कभी कभी कुछ कारण से एकदम एक बार ये सिलेंडर मारने के लिए गया था. यानी बात करते करते उसका गुस्सा इतना चढ़ जाता था कि वो कोई भी चीज़ उठा के मारने लगता था.
और फिर क्या हुआ कि वो इतना बढ़ गया कि ये मुझे मारने कोई कारण से मेरे आंख पर आता था, मारने के लिए जाता था। वो पहले कैसा करता था, वो डॉक्टर के पास आने के लिए भी बहुत गालियाँ देता था। तो लेके गई तो वहाँ से ट्रीटमेंट ली गाँव डॉक्टर की, लेकिन मुझसे इसको टॉयलेट ही नहीं साफ होती थी। काउंसलिंग के लिए एक डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर की भी काउंसलिंग की 2 बार। मैंने पुनः हिंगनघाट से पुनः भेजा, उससे भी फर्क नहीं गिरा। और ज़्यादा ऐसी बातें इसकी होती गई। एंड बहुत हंगामा करना, चिल्लाना, चीखना, किसी के ऊपर आपने मेरे तरफ ही देखा तो उसको मारने के लिए जाना है, मोहल्ले में सभी तरफ ऐसा ज़्यादा हो रहा था। फिर क्या हुआ, जैसे मैं तेजियान फाउंडेशन से हैप्पी थॉट से जुड़ी हूँ, और एक मॉर्निंग का वायरच मॉर्निंग करके एक स्वप्निल बावसी करके यहाँ की मुंबई के है, वो उसका सेशन में रोज अटेंड करती हूँ वायरच मॉर्निंग करके। तो उन्होंने रूपा शाह मैडम का सेशन लिया। तो फिर मैडम से हॉस्पिटल में हमने कांटेक्ट किया, फिर जूम ऐप पे हमने बातचीत हुई हमारा 1 घंटा। मैडम ने पूरा डिटेल लिया हमसे और रितेश से, फिर दवाई भेजी। तो वो पहले महीने से ही जो इसका प्रॉब्लम था, वो बहुत दवाई लेने के बाद सबसे पहले तो मैं हम जब उस नए घर में गए थे, भाड़े के घर में, तो मैं इसके पास सोने के लिए डरती थी। लेकिन मैं बोली अभी वहाँ पे हमको ऑप्शन नहीं था वो घर में, तो इसके पास मैं सोई। तो 4 दिन हुए थे इसकी दवाई शुरू हुई थी, तो ये इतना शांति से सो गया था। मैं रात भर देखती थी कि ये इतना शांति से कैसे सो रहा है। फिर देखा मैंने कम से कम 4 महीने इनके साथ सोई। तो जब से हमने रूपा मैडम की दवाई चालू की, तो इतना आराम होते गया, बहुत आराम होते गया। और जो उसकी चिड़चिड़ाहट थी, गुस्सा था, बहुत सारी चीज़ें यानी बार बार देखना, या उसने मेरे तरफ देखा, वो मेरे तरफ हंसा, यानी मुझे इसके साथ बाजार जाने की भी डर लगता था, क्योंकि दुकानदार ने अगर इसके तरफ देखा तो उसके साथ झगड़ा करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो धीरे धीरे कम होती गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले से जब अगर देखा जाए, तो इसका सबसे पहले का जो था रवैया, वो देखा जाए तो आज समझो ये 92% ठीक हो चुका है।